Hello and welcome to South Asia Today, where we bring you in-depth insights into the key events shaping South Asia. I'm Shivangi Mishra, and on today's top stories. Bamboo innovation brings safer roads and greener growth. US to close consulate in Pakistan's Peshawar, citing safety concerns. And POJK health crisis deepens as workers take to streets. Let's begin the show. What if the barrier protecting you on highways wasn't made of steel but bamboo? It may sound surprising, but in India's Nagpur city, scientists have engineered bamboo using advanced technology to create durable safety solutions. From crash barriers to green infrastructure, this versatile plant is now driving innovation and sustainable development. Fast-moving highways, streams of vehicles, and a long barrier dividing the lanes. It may appear to be a standard crash barrier. But look closer and there's a surprising twist. It is not made of steel, but bamboo. Yes, the same bamboo once linked to rural landscapes is now helping protect lives on high-speed roads. Engineered and specially treated, these bamboo barriers are designed to absorb impact during collisions and reducing damage and enhancing safety. एक्चुअली बांस एक फ्लेक्सिबल है, ये मेटल की तरह उतना सख्त नहीं है और उसके ऊपर HTP कोटिंग है उसके लाइफ के ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो जैसा ही कोई इम्पैक्ट होता है तो बांस फ्लेक्सिबल होने के कारण जो भी इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट को वो अपने उसमें मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है और इम्पैक्ट कम हो जाता है। Research on bamboo extends far beyond road safety. At the CSIR, National Environmental Engineering Research Institute, scientists are studying diverse bamboo species to unlock their potential in environmental protection and sustainable infrastructure. From restoring degraded land and controlling air pollution to developing eco-friendly construction materials, bamboo is emerging as a versatile, nature-based solution for a greener future. जो बांस जो होते हैं उनको वेस्ट लैंड पे, डिग्रेडेड लैंड पे, फ्लाई ऐश डंप पे और जो कंटेमिनेटेड एरियाज़ हैं उस पे बांस को लगाता हूँ। और जो इंडस्ट्री धूल जो डस्ट को स्प्रेड करती हैं, डस्ट को रोकने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल करता हूँ मैं इंडस्ट्री पे। तो ये 6 महीने में डस्ट भी रोक देती हैं, प्लस जो सरफेस इरोजन है उसको रोक देती है बांस। These young researchers are at the forefront of developing and refining bamboo-based solutions, exploring new ideas and advancing sustainable technologies with real-world impact. तो हम लोग ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं कि पर्टिकुलर कौन से बाम्बू में कौन सी स्पीसीज़ में पर्टिकुलर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है और उसको बाइंड करने वाले जो न्यूट्रिएंट है वो कौन से ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हम एनालाइज करके सर बताते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा बाम्बू क्रैश बैरियर के लिए अच्छा है और उसके बाद में हम सजेशन देते हैं उन्हें। Bamboo is more than just a plant. It's a catalyst for a growing green economy. Today, it is being widely used in construction, furniture, paper, handicrafts, and a range of sustainable products. This versatile resource not only offers eco-friendly alternatives to conventional materials, but also creates new income and livelihood opportunities for local communities, making sustainability both practical and profitable. ये बांस के संबंध में बहुत ही रीच इस प्रकार का एरिया है और हमारे कई ज़िलों में बांस की नेचुरल तौर पे और आज लोग किसान भाई भी आजकल बांस लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बड़े उद्योगों में जैसे कि बांस से कागज़ बनता है तो पेपर मिल्स है हमारे यहाँ पर, या उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बांस जा रहा है जिससे फर्नीचर बन रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स वस्तुएं बन रही हैं, कॉटेजेस बन रहे हैं, कई प्रकार के खिलौने बन रहे हैं। और तीसरी फिर हम लोग छोटा मोटा जो बांस रहता है तो खेती के लिए बहुत काम आता है बांस में।
Once seen as a simple rural resource, bamboo is now at the forefront of innovation, powering solutions from road safety to sustainable infrastructure. Blending science with nature, it's helping shape a greener future. The United States has announced the closure of its consulate in Peshawar, citing security concerns for its diplomatic personnel amid continuing instability in Pakistan's northwestern region. The decision marks a significant shift in Washington's diplomatic presence near the Afghanistan border, an area long affected by militancy and unrest. Take a look. Pakistan's continuing failure to rein in terrorism and ensure security in its northwestern regions has once again come under global scrutiny following the decision to shut the US consulate in Peshawar. For years, the country has grappled with extremist violence, militant attacks, and repeated incidents targeting security forces, foreign missions, and civilians, raising serious concerns over the effectiveness of Pakistan's security and counter-terrorism framework. Regions bordering Afghanistan, particularly Khyber Pakhtunkhwa province, have witnessed recurring terrorist activity and unrest, turning the area into a persistent security challenge for foreign governments and international organizations operating in Pakistan. Amid mounting security concerns, the United States announced the closure of its consulate in Peshawar, citing the safety of its diplomatic personnel. The decision marks a significant diplomatic shift in a strategically sensitive region long associated with militancy and instability. Washington said all diplomatic engagement related to Khyber Pakhtunkhwa province will now be handled through the US Embassy in Islamabad. The move comes as Pakistan continues to face growing security threats, including militant attacks and violent protests targeting foreign interests, further damaging the country's international image and raising concerns over the safety of foreign personnel operating there. यूएस कॉन्सुलेट सुनने में आया है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बंद किया गया है और ये है कि कॉन्सुलेट बंद होने से मेरे ख्याल में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और इससे इम्पैक्ट भी बुरा पड़ेगा। तो ये है कि यहाँ पे जो कॉन्सुलेट है उसके ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की जाती थी, सहाफ़ियों के लिए जो है सरगर्मियाँ की जाती थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं हुआ। Pakistan's northwestern regions have remained vulnerable to security threats for years, with incidents of violence and unrest frequently reported near the Afghanistan border. Khyber Pakhtunkhwa province, including Peshawar, has witnessed repeated attacks targeting security personnel, civilians, and public infrastructure, prompting authorities to maintain heightened security measures in the area. The volatile security environment has continued to pose challenges for foreign missions and international organizations operating in sensitive regions of the country. The evolving security situation has also kept concerns alive over the safety of diplomatic personnel and foreign interests in Pakistan. जो यूएस कॉन्सुलेट की बंदिश का फैसला पेशावर में किया गया है, तो देखिए ये तो इंटरेस्ट की बात होती है। जब तक अमेरिका की बहुत ज़्यादा स्टेक्स खुसूसी तौर पर हमारे कबायली अजला में और अफ़गानिस्तान में थे, तो उस वजह से यहाँ पर कॉन्सुलेट की उनको शायद ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही थी, महसूस हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ और यूएस कॉन्सुलेट जो है बहुत एक्टिव था। लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए तो जब से अफ़गानिस्तान से नेटो अफवाज का इनखला हुआ है और अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ है, तो अभी अमेरिकी इंटरेस्ट शायद उतना अफ़गानिस्तान में भी और कबायली अजला में भी जो है शायद ना हो, तो इसलिए उन्होंने ये बंदिश का फ़ैसला किया है। The closure of the consulate is expected to intensify international attention on Pakistan's security situation, especially in regions affected by violence and instability. The move reflects growing caution among foreign governments regarding the safety of diplomatic personnel in volatile areas and could influence how international missions operate in Pakistan going forward. Now we take a look at some happenings in Asia in a segment called Asia Watch. Vietnamese President
Toulam held talks with Indian Prime Minister Narendra Modi in New Delhi a day after he arrived on his first visit to the country. Discussions focused on deepening the bilateral ties, with a potential deal for India's BrahMos supersonic missiles topping the agenda. A deal with Vietnam could be worth about 60 billion rupees, including training and logistical support. Lam also laid wreath at Rajghat, a memorial dedicated to Indian independence hero Mahatma Gandhi earlier in the day. India considers Vietnam a key part of its strategy to ensure stability in the Indo-Pacific region amid China's growing influence. Crowds gathered in central Tehran for a 67th night rally, waving Iranian flags and chanting slogans in support of the country's leadership amid ongoing tensions with the United States and Israel. People assembled around the memorial for late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, with some shouting "Down with Israel." Some participants voiced defiance over the possibility of further conflict, expressing skepticism about renewed hostilities while also calling for resilience. Several attendees said any negotiations should only serve to consolidate gains made during the conflict, while warning against concessions that could undermine Iran's position. "40 years old, Saliha Bibi was one of hundreds of Afghan refugees waiting at the Pakistani border last week to be repatriated to Afghanistan, a country she has never seen, as fears rise for their safety due to fresh fighting between the neighbors. Islamabad wants all Afghan nationals to leave the country except for those with valid visas and has expelled more than 2 million out of 3 million back to their home country since 2023. Many are second and third generation refugees who fled violence at home in the 1980s. Afghans have been waiting for days for Pakistani officials to let them through the border amid fresh fighting between the two countries. Pakistan and Afghanistan have seen the worst fighting this year since the Taliban took over in Kabul in 2021. Islamabad says Kabul gives refuge to Islamic militants who attack inside Pakistan. Afghanistan denies this, saying the militancy is Pakistan's domestic problem. Long queues of trucks loaded with the refugees and their luggage have been stationed on both sides of the road leading to the border crossing. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, a grim irony unfolds as health workers, the very people who save lives, are forced onto the streets in protest. In Muzaffarabad, employees demand job regularization after years of service, exposing official apathy. Their struggle lays bare a system where those safeguarding public health are left fighting for their own survival. You have a report. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, health department employees in Muzaffarabad have taken to the streets protesting outside the Central Press Club over job insecurity. Despite years of continuous service, they remain on temporary positions, demanding regularization in line with Pakistan's policy. Protesters say repeated assurances have yielded no results, forcing them to intensify their agitation for basic rights and stability. इंशाल्लाह हम लाज जरूर रखेंगे। हम इस दुपट्टे के जो आपकी भाई जो मौजूद है, इंशाल्लाह आपका जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद मेरा फोकस चौधरी वाजिद साहब ने जिस तरह बताया, जो सक्रिय मालियात है वो किधर अपने बाप के पैसों से हमें जो देगा, जब तक वो उनको अपने पैसों की जरूरत होती है तो एक दस्तखत से वो पूरे की 100% करते हैं। बारी बारी आती है तो वो एक लेटर लिखता है, हम कहां से लाए, ये हम टैक्स के पैसे। The protest also highlights deep financial distress among health workers, many of whom have served for years on meager and irregular salaries. Employees say they continue to work round the clock despite rising expenses and lack of job security, with no clear policy for regularization.
They said that repeated delays and broken promises have pushed them into economic uncertainty, forcing them to protest for fair wages and basic financial stability. इस मौका पे मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं अमूर कश्मीर से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा ये नाइल हुकूमत, ये करप्ट हुकूमत, ये आप देखें इन्होंने कितने कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, कितने खजानों से पैसे निकाल रहे हैं, ये नफरतें डेवलप कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि इनके जायज़ मुतालबात हैं, ये फौरी तौर पर ये पूरे किए जाएँ। Nurses who work tirelessly around the clock to save lives say they are being pushed to the brink. Despite long hours and critical responsibilities, they continue to face neglect, low wages, and job insecurity. Their plight exposes a harsh reality in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, where those on the front lines of healthcare are left struggling, reflecting a clear failure of governance and accountability. ये हमसे सर्विसेज तो दे रहे हैं 24/7 हम काम तो कर रहे हैं, ये नहीं देखते ये कैसे जाते हैं ड्यूटीज पे, ये बच्चे छोड़ के घर छोड़ के दूर दराज 24/7 हम लोग सर्विसेज फराहम करते हैं, हम माओ की जाने बच्चों की जाने बचाते हैं, इनकी बेसी ये बेहिस लोग हैं, ये नहीं देखते कि ये खुद कितनी प्रॉब्लम से हम लोग जाके ये काम दूर दराज इलाकों में करते हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है, जिस तरह पाकिस्तान के चारों सूबों में और जिस तरह जो कोर्ट से डिसीजन आया हुआ है कि हम लोगों को नॉर्मल मिजानी पे शिफ्ट किया जाए, जब तक हम लोगों को नॉर्मल मिजानी पे शिफ्ट नहीं किया जाएगा तो हम लोग इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। The situation reflects broader hardships faced by people across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, where access to quality healthcare, stable employment, and basic infrastructure remains a constant struggle. From under-equipped hospitals to uncertain livelihoods, residents continue to face neglect and systemic gaps. Repeated protests highlight growing frustration as people are forced to fight for basic rights that should have been ensured long ago. Tourism in Jammu and Kashmir continues to surge, driven by favorable weather, strengthened security measures, and sustained administrative efforts. At Dal Lake, vibrant scenes unfold as tourists enjoy shikara rides and take in the valley's beauty. The rising football reflects growing confidence, with visitors exploring Kashmir freely and embracing its timeless charm. Take a look. Jammu and Kashmir is witnessing a steady surge in tourist footfall as pleasant weather and improved connectivity make travel more accessible. Enhanced security arrangements have boosted visitor confidence, while sustained efforts by the administration to promote tourism are delivering results. From hotels to houseboats at Dal Lake, local businesses are reporting increased activity, signaling strong growth in the tourism sector. जैसे लोग बोलते हैं कि कश्मीर एक धरती का स्वर्ग है, तो काफ़ी टाइम से मेरा एक सपना था कि एक बार मैं कश्मीर आऊँ, क्या ये सच है कि नहीं जानूँ। तो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जैसे लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, तो रियली मैंने फील किया है कि ये धरती का स्वर्ग कश्मीर है। वैसे ये हमारा चौथा दिन है। हमने अभी तक श्रीनगर घुमाए, सोनमर्ग घुमाए, श्रीनगर में ये दाल लेक घुमाए। दाल लेक में हमने काफ़ी सारी राइडें की, शिकारा राइड की है। जैसे ही शाम ढली उसी टाइम पे टेम्परेचर 0 डिग्री गया, रात को 12-1 बजे तक वो -1 -2 भी चला गया था। या काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा कश्मीर में। At the heart of this tourism surge is Dal Lake, where vibrant scenes have returned with tourists enjoying shikara rides and staying in traditional houseboats. The lake, known for its scenic beauty and cultural charm, continues to be a major attraction. Visitors are soaking in the serene atmosphere, reflecting the renewed energy and growing appeal of Kashmir as a top travel destination. डाल लेक में कल पूरा दिन थे, तो बोट में अच्छा घूमे, शॉपिंग भी बढ़िया किया। यहाँ के पब्लिक भी अच्छा है, सब प्यार से बात करते, कोई भी चीज़ नहीं जाएगा। यहाँ का मौसम तो बढ़िया है, मतलब होते ना, हार्ट ऑफ इंडिया कश्मीर। आई लव इंडिया एंड कश्मीर ऑल्सो नेचर। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर कश्मीर में। आज पहला तो हमारा दूसरा दिन है, सोनमर्ग जाएंगे। वेदर तो बहुत बढ़िया, एकदम क्लाइमेट मतलब होता है ठंडा, मतलब
ब्यूटी, इंडियाज ब्यूटी, बहुत मज़ा आ रहा है. Tourists are also highlighting the warm hospitality and sense of safety across Kashmir. Visitors say locals are polite, helpful, and welcoming, making their stay comfortable and memorable. Improved security measures have further strengthened confidence, allowing travelers to explore freely without concern. This welcoming atmosphere, combined with a secure environment, is encouraging more people to visit and experience Kashmir's beauty firsthand. हम यहाँ गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए और अपना डल लेक में एक दिन हमने स्टे किया. फिर उसके बाद पहलगाम गए, दरगाह शरीफ पे दर्शन किए, बहुत सारा घूमे हम. बहुत मज़ा आया सच में. डल लेक बहुत अच्छा है, एक सुकून है यहाँ आके. अब जैसे हमने नाइट बिताई है तो लगा कि हाँ किसी और ही दुनिया में है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो यहाँ के लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है. लोगों के मन में ये है कि यहाँ पे ये है वो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपके चैनल के थ्रू भी यही कहना चाहती हूँ लोगों को कि यहाँ पे बहुत अमन शांति है. The tourism growth is being reinforced by a broader push in development across Jammu and Kashmir. Improved road networks, better air and rail connectivity, and upgraded public infrastructure have made travel smoother and more accessible. Enhanced facilities, cleaner public spaces, and organized tourism services are contributing to a better visitor experience, while also generating employment and supporting local livelihoods across the region. As we wrap up today's episode of South Asia Today, we thank you for joining us. We'll return next week at the same time with more insights and updates. This is Shivangi Mishra signing off on behalf of our entire team. Until then, stay safe and goodbye.